Hello students, today we are going to discuss chapter electric current for class 10th. What is the meaning of the electric current? Current meaning flow. What is the meaning of the current? Current meaning flow. For example, when the water flows from one place to the another place, it is called water current. वाटर अगर फ्लो करेगा तो अपन लोग क्या बोलेंगे? वाटर करंट. Similarly, when the wind flows from one place to the another place, it is called wind current. It is called the wind current. So what is the electric current? When charge flows from one place to the another place. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं charge flow means electron का flow. So when the electron flows from one place to the another place in the conductor called electric current. So it is the flow of the electron in the electric current. Okay. So या फिर ये भी कह सकते हैं the amount of current flowing per unit time is called electric current. तो electric current अगर I equals to Q by T. Charge per unit time, flow of charge per unit time is called the electric current. This is conductor. This is called cross section area of the conductor. So electric current means amount of charge per unit time, यानी अमाउंट कितना अमाउंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेकेंड में पर सेकेंड जो चार्ज फ्लो करेगा उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो व्हाट मेक द चार्ज फ्लो. चार्ज कैसे फ्लो करता है, कौन फ्लो कराता है? तो व्हेनेवर द पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड द चार्ज विल फ्लो. कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर जनरेट होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक टैंक ए है और एक टैंक बी है, यहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा है, अगर सिंपल हम लोग बात करें कि वाटर क्यों फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन द हाइट. ठीक है, ये दूसरी हाइट पर थी, ये दूसरी हाइट पर थी, इसकी एनर्जी दूसरी थी, इसकी एनर्जी दूसरी थी, तो ये क्या थे, एनर्जी की डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, वाटर फ्लो हुआ. फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर कोई टेम्परेचर होगा, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है 60 डिग्री सेल्सियस पर और दूसरी बॉडी है 20 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों को आप किसी तरह से आपस में कनेक्ट पिलाएं, टच करें, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, द हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम ए टू बी. हाउ कैन से द हीट करंट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी. सो फॉर द heat flow, the temperature difference is the responsible for the same. In this case, difference of height, due to difference of height, water flows from tank A to B. Similarly, in this case, heat flows from A to B due to temperature difference. So similarly, in case of cell, this is the representation of the cell. ये cell बना हुआ है. This is called the positive terminal of the cell. This is at high potential and this is at negative potential. Potential will be discussed after some lecture. So this is positive terminal and this is the negative terminal. So that is with this high electric potential, it is lower electric potential. So difference between higher potential and lower potential is called potential difference. और अगर हम लोग potential difference की बात करें तो the function of the cell is create the potential difference. ये जो क्या करेगा, जो function cell का है, what is the function of the cell? Cell create the potential difference. In reality में जो cell है वो क्या है, energy है. In the further class we will discuss about the potential. The potential is the work upon time. It is the ratio of the work upon charge. Clear? So जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, वर्क यानी एनर्जी.
सो रियल में जो सेल है, सेल इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी, एंड द एनर्जी दैट मीन्स वर्क पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस. व्हेन द चार्ज मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू द अदर प्लेस, देयर विल बी सम वर्क विल बी डन ऑन फ्लोइंग द चार्ज. सो वर्क अपॉन charge is called potential. Now we are discuss what is the free electron. So every atom is made of electron, proton and neutron. Proton consists on nucleus and neutron also, and the electron moves in a circular path in various orbit. Okay, like this, and this is the distance between the electron and the proton, and there will be electrostatic force between the electron and the proton. Okay, this is the force of attraction between electron and the proton. In non-metal, the number of electron outermost in electron like 5, 6, 7. अगर कोई नॉन मेटल है तो इसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, 5, 6, 7. तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिलीज करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता. बट इन द मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर लाइकली 2, 1, 2 और 3. सो इट इज इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ द कंडक्टर, like this. So whenever the electron remove, the body will charged. Okay, so depending the number of free electrons, substance are classified into Z. So अब देखिए क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम लोगों ने तीन तरह से जनरली डिवाइड किया हुआ है कंडक्टर्स. फर्स्ट, कंडक्टर हैव द लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर चार्ज कैरियर. तो चार्ज कैरियर अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर यानी जिसकी वजह से करंट फ्लो होती वो होते इलेक्ट्रॉन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इंसुलेटर. इंसुलेटर में क्या होगा, हैव लेस और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट फ्लो पॉसिबल नहीं होती है. नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर. इन द सेमीकंडक्टर हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन एट द रूम टेम्परेचर, बट for in the specific condition in the class 12 we will studied about the what is the semiconductor. So in the semiconductor we will discuss process doping. ठीक है. तो डोपिंग है क्या रियलिटी में? डोपिंग इज द प्रोसेस by which we can increase the conductivity of the semiconductor. Okay, so generally semiconductors are not like conductor, they do not have free electrons at room temperature, but under specific condition it develops free electron and holes. Okay, so there are two things which are responsible for the flow of the current in the case of the semiconductor. The first is the electron, first type is electron, and second one is the hole. Okay, so it will be discussed in higher classes. और सेमीकंडक्टर द यूज सेमीकंडक्टर का बहुत ब्रॉड है. आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पढ़ते हैं, इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वी यूज द सेमीकंडक्टर. फॉर एग्जांपल सिम कार्ड इज द बेस ऑफ द सेमीकंडक्टर. ठीक है. एंड नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन से आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट. तो ये आईसीज अगर आप किसी लैपटॉप का या कंप्यूटर का आप मदरबोर्ड ओपन करें तो बहुत सारी आईसीज लगी होती हैं, मोबाइल में सब जगह आईसीज होती हैं. तो दीज आर द सेमीकंडक्टर्स. Okay, so there are some questions. A substance which does not allow the charge pass through easily, it is called the insulator. Negative terminal is called lower potential. The substance which do not have the free electron but can develop under specific condition are called semiconductors. Okay. The function of the cell create the potential difference, to create the drop, to create the potential difference. So simple है, to create the potential difference. Okay, so this is the working of the cell. और ये basically cell की बात करें तो cell is the source of the energy. So flow of the current, this is a conductor. ठीक,
तो इसमें कंडक्टर में क्या है, ये दीज आर द एटम्स, और एटम में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। ओके, सो दीज नाउ ये क्या है, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये जो आपको ब्लैक स्पॉटेड दिख रहे हैं, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, अब these electrons moves in a such way that the average speed or say average velocity in a conductor is zero. That means अगर किसी भी कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में इवन फ्री स्टेट में, यानी अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स ऐड नहीं किया गया, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ द करंट इन द वायर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन moves in a such fashion that the speed या average speed of the electron is zero. So there is no displacement. There is no displacement in the electron. So no current flow in the free wire without support of the external battery as well any source. ठीक है? Okay. So like here 5 to 5 देखिए कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। For example जैसे अगर हम लोग एक और बात करें, एक नेक्स्ट ऐसे एक ऐसे मूव करे, एक इस तरफ मूव करेगा तो एक इस तरफ मूव करेगा, एक इस तरफ मूव करेगा तो एक ऐसे, राइट। टोटल जो अगर देखा जाएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, विल बी जीरो होगी। ओके, सो नाउ वी अप्लाइड द एक्सटर्नल सोर्स, दैट मींस वी कैन से वी आर अप्लाइंग द बैटरी। सो जैसे अपन लोगों ने बैटरी अप्लाई करी तो ये जो रैंडमली मोशन थी, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्स टुवर्ड द positive terminal of the battery like this. Okay, so electron move करेंगे towards the positive terminal, और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और करंट किधर फ्लो करेगी, करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दैट मींस फ्रॉम दिस टू this. Clear? So the direction of the current is always opposite to the motion of the electron, और simply we can say इस मॉडल को अपन लोग ऐसे भी पढ़ लेते हैं कि इसे इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो इस तरफ फ्लो कर रहे हैं। So the flow of the current will opposite to the motion of the electron, as well we can say the direction of the electric current is same as positive charge. Okay. Now, so electron moves with a certain average drift. So इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने लगे, एक ड्रिफ्ट के साथ चल रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि okay, so the electrons move with a certain average drift. Okay, so it is called average velocity, is also known as drift velocity of the electron, जो लगभग 10 to the power minus 4 रेंज में। So flow of free electron from negative to positive, and the current देखा जाए तो करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट will flow from positive to negative. Getting my point? तो करंट कैसा फ्लो करेगा, the flow of current will be positive to negative. So now we discuss what is the potential difference. Okay, so this is the stand, insulated stand A. This is at high potential, and this is B at low potential, connected by the wire somewhere. Somehow the current is flowing, a charge is flowing. Okay. So due to difference in potential, charge will flow from the higher potential to lower potential. So in this flowing of the charge, work is done. So the potential difference is between 2 points. The circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point. ठीक है, and the unit of the potential simple अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कुछ बातें मैं बता दूं आप लोगों को कि VA minus VB, that is say this is higher potential, this is lower potential, VA minus VB equals to W by Q. So unit is
जूल पर कूलम, आल्सो नोन एज वोल्ट। साइंटिस्ट थे वोल्टा, तो उन्हीं के ऑनर में इसके जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। ओके, सो नाउ हाउ डज द लाइटनिंग अकर्स। ठीक, अब देखिए देयर आर मैनी वेज टू प्रोड्यूस द चार्ज। ठीक, फॉर एग्जांपल देयर इज वन वे इंडक्शन। ठीक है, इन द इंडक्शन वी प्रोड्यूस द चार्ज विदाउट टचिंग द बॉडीज। इन द क्लास 12th we will studied in the broad way. Similarly, there is another way of the charging which is known as the friction. When we rub two bodies, the charge is transferred, and due to this transfer, charging is getting on the body. Okay, so similarly कहता है कि देखिए क्या होगा, जहां पर जो आपको दिख रहे बादल, जो आसमान में जो दिख रहे हैं, ये क्या कर देते हैं, रब करते हैं। तो रब करने की वजह से क्या हो जाता है, इसमें स्टैटिक चार्ज आ जाता है। ये चार्ज, ये जो क्या आ जाएगी, स्टैटिक चार्ज आ जाएगी। और ये जो क्लाउड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, एट हाई पोटेंशियल, और अर्थ क्या हो जाएगी, एट अ जीरो पोटेंशियल। ओके, तो अर्थ कैसी होगी, जीरो पोटेंशियल पर। तो चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो दिस, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, lightning occurs. Okay, so now there is some questions for you. Electrons from the terminal, positive terminal of the cell, but is from the positive terminal to the, okay, so conventional direction है electron, next conventional direction of the opposite to the direction of the flow of the electron. The function of the cell is create to the potential difference. Okay, the potential of the earth is zero. Okay, so potential of earth कैसा होता है, zero potential. The earth is infinite body, so zero potential. Okay.